to After Effects classes. Today I am going to start lecture classes of subject OOPS. OOPS means Object Oriented Programming System, and here I will teach you how to run programs in C++. I will give you information related to OOPS subject. Now going to start introduction. In introduction I will tell you that what is OOPS. OOPS means Object Oriented Programming System. It is a programming method which used to organize software by using objects. An object which represents a real world entity, and it also includes both data that is known as attributes and functions that is known as methods. Both operate on that data, and OOPS makes programs easy to develop, understand, maintain, and reuse. On the other side, in simple words, we can say OOPS is a programming structure, programming paradigm that organizes programs around the classes and objects. Here class means data member, class means data members, and member functions. While object means instance of class. Object means instance of a class. OOP, Object Oriented Programming, helps build modular, reusable, maintainable software by modeling the real world entities. It also promotes code reusability through the inheritance. It also improves code maintainability and scalability. It also provides data security through the encapsulation and models real world entities using classes and objects. Now I am going to give you example. For example, we take a car. In car, attributes and data are color, model, and speed. And methods or functions, that is start function, stop function, accelerate function. And here we can see car is an object. Now what are the main principles of OOPS? First principle is class. What is class? Class is a blueprint, template for creating objects. What is object? It is an instance of a class. What is encapsulation? Wrapping data and methods into a single unit and restricting direct access, that is known as encapsulation. Means we can take here example capsule. You can see in capsule all medicines are hid. You can say all medicine wrapped by capsule in a single unit and restricted direct access. Now next one is abstraction. Abstraction means
hiding implementation details and showing only essential features. Means you can see when you use computer, you cannot see how to function in behind the any software. You can see only main properties, main features of that software. That means here used abstraction. Now next one is inheritance. Inheritance means creating a new class from existing class to reuse code. If you want to reuse any code, then you can create a new class from existing class. That is known as inheritance. You can take example parent and child. Parent to child. And child inherits some features from parent. Polymorphism, it's allow the same method to perform different tasks in different situations. This is known as polymorphism. You can take here example of volume. Volume is one method which is used to perform different tasks for different shapes. This is the polymorphism. Now, next one, what are the advantages of OOPS? First advantage is that in this code reusability possible, better security through the data hiding. It provides better security through the data hiding, and it also provides facility to easier maintenance and debugging the errors. It also provides facility to modular and organized code. It's a faster software development. It also provides faster software development. These are the main advantages of OOPS. What are the applications where we use OOPS? We use OOPS for software development, for mobile applications, for web applications, for game development, for banking and management systems. Now, if you want to write any definition in an exam, then you can write, it is a programming paradigm that uses objects and classes to design the programs. It improves code reusability, security, and maintainability by implementing concepts such as encapsulations, abstraction, inheritance, and polymorphism. It is clear what is OOPS. Now I am going to introduce OOPS in Hindi language so that you can understand easily. Those students who have a problem to understand English to English, they can understand in Hindi easily. First, in introduction, we can say that OOPS क्या है, एक प्रोग्रामिंग मेथड है जो यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर को ऑर्गेनाइज करने के लिए बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट्स. और ऑब्जेक्ट क्या है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को बोला गया है जिसमें डेटा और फंक्शन दोनों आते हैं. डेटा को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, फंक्शन में हम मेथड्स को बोलते हैं. और जो OOPS है उनका मेन मोटिव ये है कि ऐसे प्रोग्राम्स बनाने जिनको हम इजीली डेवलप कर सकें, इजी टू अंडरस्टैंड हो, जो कि मेंटेन हो जाए इजीली और उनको रीयूज़ किया जा सके. क्लासेस के अंदर डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस आते हैं, ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्लास के इंस्टांसेस आते हैं. एग्जांपल के तौर पर आपके पास एक कार है, कार में उसका डेटा जो है वो उसके कलर और मॉडल स्पीड को बोलते हैं. फंक्शन उसमें कैसे कार को स्टार्ट करना है, कैसे स्टॉप करना है, कैसे उसको उसकी स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करना है, एक्सेलरेट करना है, तो वो इसमें हम कंसीडर करेंगे. नाउ नेक्स्ट हमारे पास
हमने डिस्कस किया था कि मेन प्रिंसिपल्स कौन से हैं। पहला प्रिंसिपल इसमें आता है क्लास। क्लास क्या है? एक ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट को बोला गया है जो कि ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लास का इंस्टांस कहलाता है। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? जब आप डेटा को एक सिंगल यूनिट के अंदर हाइड करके रखते हैं और उसके ऊपर मेथड्स को यूज करते हो। कहने का मतलब एक सिंगल यूनिट के ऊपर आप डेटा को रैप करते हो, मेथड्स को यूज करते हो और डायरेक्ट एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करते हो, उसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप कैप्सूल देखते हो, कैप्सूल के अंदर सारी मेडिसिन हाइड की होती है, आप उनको ओपन नहीं कर सकते, डायरेक्ट उसको एक्सेस नहीं कर सकते, आपको वो कैप्सूल एज इट ही लेना पड़ता है पानी के साथ, ताकि अंदर जाके वो आपके ओपन हो जाता है। तो मतलब ये है कि डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता है। तो इसकी एग्जांपल आप दे सकते हो इनकैप्सुलेशन की कैप्सूल। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि आप जैसे कंप्यूटर में MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या फिर आपको जो सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे C++ के लिए, आप उसमें कोडिंग करते हो। कोडिंग करने के बाद आप उसको कंपाइल करते हो, आपके पास आउटपुट आ जाती है, बट बैकएंड पर कैसे काम हो रहा है वो आपको नज़र नहीं आता। मतलब हाइड कर देता है इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को, सिर्फ शो करता है एसेंशियल फीचर्स को। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग क्लास है उसी से आपने एक न्यू क्लास जनरेट करनी है, मतलब उनके कोड को रीयूज़ करना है। जैसे पेरेंट क्लास के कुछ फीचर्स आपने चाइल्ड क्लास में यूज़ करने हैं। पेरेंट को हम सुपर क्लास भी कहते हैं, चाइल्ड को हम सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं, बेस क्लास और सब क्लास भी बोल देते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? ये अलाउ करता है सेम मेथड डिफरेंट टास्क को डिफरेंट सिचुएशन में परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल वॉल्यूम नाम का मैंने एक मेथड बनाया जिसको मैंने इम्प्लीमेंट करना है डिफरेंट शेप्स के ऊपर। मैं उसको रेक्टेंगल के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ उसी मेथड को, और मैं कोन के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ, सिलेंडर के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ, स्फीयर के ऊपर, स्फीयर इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ, स्फीयर वगैरह, सर्कल वगैरह के ऊपर। तो मतलब डिफरेंट शेप्स के ऊपर सेम मेथड को यूज़ किया जा रहा है, तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। एडवांटेजेस में आप बताओगे कि फर्स्ट एडवांटेज ये है कि अगर हम ऊप्स कंसेप्ट यूज़ करते हैं अपने लैंग्वेज में, तो इससे क्या होता है कि कोड की रीयूजेबिलिटी इंक्रीज होती है, और सिक्योरिटी जो है डेटा को हाइड, क्योंकि इसमें डेटा को हाइड किया जाता है तो इससे डेटा की सिक्योरिटी बेटर होती है। ये मेंटेनेंस को ईजियर बनाता है और एरर को डिबग करना भी ईजी हो जाता है। इसमें जो कोड है उसको मॉड्यूलर फॉर्म और मतलब प्रॉपर बेस उसको ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है, और ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है इसमें बड़ी फास्टर होती है, बहुत ही फास्टर करते हैं। और एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया है? इसको सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है, मोबाइल एप्लीकेशंस में भी इनको यूज़ किया जाता है, वेब एप्लीकेशंस को यूज़ किया जाता है, गेम को डेवलप करने में इसको यूज़ किया जाता है, बैंकिंग और मैनेजमेंट सिस्टम में भी ऊप्स के कंसेप्ट यूज़ किए जाते हैं। अगर आपने एग्जाम में डेफिनेशन लिख के आनी है तो आप इस डेफिनेशन को लर्न कर सकते हो लिखने के लिए। बाकी आपकी चॉइस, आप कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन लेकर उसको लिख सकते हो जो सही हो। जैसे कि आप ऑब्जेक्ट में ऊप्स में आप ये लिखोगे कि ये एक प्रोग्रामिंग पैराडिगम है जो यूज़ करता है ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस को। किस पर्पस के लिए यूज़ करता है? प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करने के लिए, और ये इम्प्रूव करता है कोड रीयूजेबिलिटी को, सिक्योरिटी को, मेंटेनेबिलिटी करता है बाय द इम्प्लीमेंटिंग कॉन्सेप्ट्स जैसे कि इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये मैंने आपको इस लेक्चर फर्स्ट में, ऊप्स के लेक्चर फर्स्ट में मैं आपको बता रही हूँ कि इन ऊप्स होता क्या है, उसकी इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर की है मैंने, कौन से प्रिंसिपल उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं, क्या उसके एडवांटेजेस है, क्या उसके एप्लीकेशंस है, एग्ज़ाम में आपने कैसे इसको लिख के आना है, मैंने आपके साथ क्लियरली डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसको आप लाइक जरूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मैं आपके साथ इस सब्जेक्ट को टिल एंड तक जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग और उससे एडवांस लेवल पर इस सब्जेक्ट को डिस्कस डेली करूँगी। डेली आपको एक वीडियो आपको जरूर मिलेगी
और ये लेक्चर 1 आज फर्स्ट लेक्चर मैंने आपके साथ शेयर किया है। ऐसी डेली आपका लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 और टिल एंड तक आपके सारे लेक्चर्स भी कंप्लीट होंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी इसमें कवर अप करवाऊंगी। आपको प्रैक्टिकली कैसे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना है वो भी सिखाऊंगी। ऑनलाइन कैसे करते हैं, ऑफलाइन कैसे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना है, कैसे लॉजिक लगाना है, ये ऑल दीज थिंग्स आई विल बी डिस्कस्ड इन कमिंग वीडियोस। सो आप इन मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस मिलती रहे, और ऑल पर टिक लगा लेना ताकि जो भी नई वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूं वो आपके पास पहुंच जाए। Thank you. If you like this video, please like and share my channel with your friends because